Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of this special series called Pakistan and Geoeconomics. इस सीरीज़ में जो भी टॉपिक अंडर डिस्कशन है वो है CPEC इन पर्टिकुलर एंड BRI इन जनरल और इसका पाकिस्तान पे और इसकी इकोनॉमी पे आगे क्या इम्पैक्ट होगा। हम 2 एपिसोड्स डिस्कस कर चुके हैं और इस तीसरे एपिसोड के अंदर हम ये देखेंगे कि BRI का चाइना और पूरी दुनिया के जो ट्रेड फ्लोज़ हैं उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट हो चुका है और क्या होगा आगे। और हमारे साथ इस डिस्कशन के लिए मौजूद हैं सर बिलाल इलाही सर। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे वंस अगेन। सर स्टार्ट करने से पहले हम अभी पहले डिस्कस कर रहे थे कि यू वुड लाइक टू हाईलाइट सम ऑफ द पॉइंटर्स दैट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस 2 एपिसोड्स। जी हाँ, एपिसोड 1 और एपिसोड 2 में हमने एक जो बात की थी वो जिक्र किया था हमने तिब्बत का और सिंकियांग का, इफ यू रिमेंबर। अच्छा, ये जो सिंकियांग प्रोविंस है विच इज़ ह्यूज प्रोविंस ऑफ चाइना, इट बॉर्डर्स 8 कंट्रीज एंड इट हैज़ गॉट मुस्लिम मेजॉरिटी। तो ये जब चाइना ने फैसला किया टू ओपन अप फॉर ट्रेड कनेक्टिंग बेसिकली जो वन बेल्ट वन रोड का कॉन्सेप्ट था वो था कनेक्टिंग ईस्ट चाइना विद यूरोप। इनिशियली यही कॉन्सेप्ट था। तो वो जो दे वर लुकिंग एट दिस यूरेशियन कॉन्टिनेंट एंड द बेल्ट वाज सपोज्ड टू रन from China into Xinjiang province, then into Kazakhstan, Russia, and on to Belarus and to Poland, and so on. And into Europe. तो देखिए ये जो है ना opening up a border to trade. So you're not only opening it up for goods and services, but also then ideas and ideologies also go back and forth with goods and services. Exchange of ideas, बिल्कुल ठीक है सर। Language, practices, बिल्कुल। वो cultural impact भी होता है। तो history has got many lessons on this subject. तो the Chinese Communist Party's concern was कि जब हम border खोलेंगे तो ये जो Uyghur dominated Xinjiang province, if you recall, in the around the time that the Americans came into Afghanistan, there was a movement called ETIM. ये Eastern Turkestan Independent or Islamic Movement. Yes. Islamic movement. And they were it was called declared a terrorist movement. And they were also interacting with the Uyghur special separatists in Xinjiang. So the Chinese government first sought assurances from Kazakhstan and other Central Asian states कि आप ऐसी जो movements हैं इनको आप suppress करोगे and you will ensure the transport of goods and security services across your countries. And that assurance came from Kazakhstan. And then we see the launching of the one belt, one road. मतलब उन्होंने पहले सिक्योरिटी का इशू जो सर आजकल इधर भी काफी रेलेवेंट है, one could make an analogy. They first ensured the smooth flow of trade and goods and everything, and then they announced OBO. जी हाँ, बिल्कुल। अच्छा, अब ये जो है ना मामला सिंकियांग का, सिंकियांग is what is considered, it is not predominantly it is a non-Han majority in this. तो ये हान जो आपने बोला ये भी ऑडियंस के लिए है, हान ब्लड या हान डायनेस्टी क्या है? ये है जो चाइनीज हैं, जो हम चाइनीज सिविलाइजेशन की बात करते हैं जी, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ। सो ये जो बॉर्डरलैंड्स हैं, फॉर इंस्टेंस सिंकियांग, एंड इफ यू गो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यू कम टू तिब्बत. Tibet is also Xinjiang was not always part of China. जी सर, इसकी ट्रांसलेशन भी if I'm not mistaken is called the new territory. Yes. ये towards the last सर वो जो डायनेस्टी थी क्या नाम था उसका मैं भूल गया हूँ, चिंग डायनेस्टी, something like that, उन्होंने एनेक्स किया था चाइना को। But as recently as 1933-34 ये इन्होंने इंडिपेंडेंस भी डिक्लेयर कर दी थी। So they have been, they are borderlands in the true sense of the word, and China is very concerned that its control on the borderlands, whether it is Xinjiang or whether it is Tibet, or if you go anti-clockwise, then up in Mongolia, it is complete. Right. तो ये जो Xinjiang है,
इधर इन्होंने insurances ली to open up this border. There's this concept of Chinese heartland. Chinese heartland is where, if you look at the physical map of physical geography of China. So this is the what is called the North China Plain. North China Plain. और उसमें it is drained by the Yellow River, and this is where the Chinese civilization took root 5,000 years ago, and this is the longest continuous civilization in the world, and so Chinese are obviously very proud of it. And at various times, it has been invaded from Central Asia through present-day Xinjiang. It has been invaded from Tibet, and also most famously from Mongolia. वो तो Mongols in fact ruled over China also. So अब जो उनकी thinking है वो ये है कि ये जो heartland है हमारे जो core है of the Chinese civilization, ये इसके इर्द-गिर्द ये borderlands हैं. मंगोलिया है नॉर्थ में, वेस्ट में है सिंकियांग है, साउथ में तिब्बत है. और एक तो मैंने जिक्र किया इसका व्हाट हैपेंड इन सिंकियांग. सिंकियांग में 1.5 साल के लिए 1933-34 में बन गई इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईस्टर्न तुर्किस्तान विद दिस कैपिटल इन काशगर. सो उसकी मुस्लिम वर्ल्ड में बहुत एक्साइटमेंट थी कि ये वो इस्लाम आ गया इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. और वो अपना अल्लामा इकबाल का आपको वो शेर भी है जिसमें ताब खा के काशगर का जिक्र है. सो आई डोंट नो व्हाट हैपेंड फर्स्ट, द शेर केम फर्स्ट, बट काशगर वाज देयर इन द मुस्लिम साइकी. सो एनीवे, तो जो इनके चाइनीज़ का कंसर्न है वो इट इज़ नॉट ओनली एंशिएंट हिस्ट्री एज इट इज़ इन द केस ऑफ द मंगोल्स, इट इज़ ऑल्सो मॉडर्न हिस्ट्री बिकॉज दिस हैपेंड इन 1933-34. In the 1930s, Tibetan army, which was at that time independent state, they invaded neighboring Chinese provinces with the aid of the British. So अब जो चाइना है वो अपने borderlands को secure करेगा, और whether it is Mongolia or now look at Mongolia. Mongolia, again a huge expanse of land. There is Outer Mongolia, which is an independent republic. Then there is Inner Mongolia, which has now 4 Chinese provinces. वो जो Mongol invasion है वो भी is very much part of the Chinese psyche, and they make sure that as much as they want to keep Mongolia under control, they also want to trade through it. For instance, there is what is called Siberia pipeline, which was supposed to run from Siberia and Russia to China, transporting gas. उसमें अमेरिका की अब जैसे जियोपॉलिटिक्स है. अमेरिका इज़ कंसर्न्ड कि जब ये गैस आनी शुरू होगी तो चाइना की जो इम्पोर्ट है LNG फ्रॉम द US वो कम हो जाएगी, एंड चाइना विल बी लेस डिपेंडेंट ऑन दी. सो अमेरिका इज़ ट्राइंग टू do whatever it can to discourage this development. China would want this pipeline to come in, but advantage है because then they can shake off American influence to that extent. But they're also concerned about Mongolia, Outer Mongolia, the Republic of Mongolia benefiting from it. कि वो कल को वो हमारे पे they should not hold the tap. वो ट्रांस जिस तरह यूक्रेन का एक रोल रहा है वो उस तरह ना बन जाए. बिल्कुल. सो दे आर गोइंग बैक एंड फोर्थ, और अभी तक फ्रॉम व्हाट आई नो अभी तक कोई सेटलमेंट हुई नहीं. सो एक तो ये पॉइंट था इस कॉन्सेप्ट ऑफ बॉर्डरलैंड्स, एंड चाइना एट टाइम्स हैज आल्सो टोल्ड पाकिस्तान टू rein in infiltration from Pakistan to China. People were going there in support of ETIM 20 years back, during the era of Pervez Musharraf. So एक तो ये पॉइंट था कि जो हार्टलैंड है वो the way it looks at the borderlands, and it will not tolerate any interference from any foreign power, whether it is Mongolia or in Xinjiang or in Tibet. एक तो ये बात है. अच्छा, दूसरी हमने बात की थी कि what was the BRI in response to? So BRI was in response to, I had identified two: global financial crisis of 2008, and then Hillary Clinton's announcement
of US pivot to Asia, which was pivot to China. अच्छा, अब इधर ये प्रॉब्लम ये है कि when America talks of the pivot to Asia, their focus is South China Sea, East China Sea, and the States of Malacca. States of Malacca say 25% of the world's maritime trade passes through the States of Malacca. And every day, average 16 million barrels of oil are transiting the trade in the straits. So, to ensure free flow of trade, the 7th Fleet, US Navy's 7th Fleet is in the States of Malacca. Police the waters. Police the waters. So they are there to what are called sea lanes of communication. They like to SLOC. So which is to everybody's advantage. Okay, all the countries that are trading, they can't afford to police the waterway. So the service that America provides is to everybody's advantage. But China's concern is that in case of war with America, so America can very easily block the Straits of Malacca. अब उसमें प्रॉब्लम क्या है कि 60% of China's trade flows go through Malacca, and 80% of its crude oil and 2/3 of its LNG. It is imported through the Straits of Malacca. और सर वो सारे जाते भी चाइनीज़ बॉर्डरलैंड, वो जो ये सारे के साथ शंघाई पोर्ट्स, ग्वांजो, सारे जो पोर्ट हैं स्ट्रैडल्ड अक्रॉस दिस ईस्टर्न साइड, तो उधर जाते हैं और इधर से गुजर के जाते होंगे. और वो एक जो है ना 60% ऑफ चाइना ट्रेड. दूसरा जो मसला है वो ये है कि उनकी जो एनर्जी नीड्स हैं मोर क्रिटिकली, वो सब मलाका से आ रहा है. तो नेशनल सिक्योरिटी इशू बन जाता है ना. इसकी सेफ्टी, ये अश्योर बात करना कि दे शुड हैव सम अल्टरनेटिव टू दिस एज वेल इन द केस ऑफ अ वॉर और इन द केस ऑफ रिटेलिएशन फ्रॉम द यूएस. देखिए वो प्रेसिडेंट हू जिनटाओ एज अर्ली एज 2003 identified this as a problem, and he has been calling this, the English translation is Malacca dilemma. Yes. So अच्छा, अब ये जो वन बेल्ट वन रोड की जब डेवलपमेंट शुरू हुई, एंड द वेस्ट आई थिंक डिड नॉट रियलाइज इट इमीडिएटली कि जो बेल्ट है वो किस किस्म की, यानी बिकॉज द वर्ल्ड थिंक्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड गोइंग मोस्टली थ्रू द सी. तो ये कितना कि ये जो बेल्ट है ये कितना इम्पैक्ट करेगी ग्लोबल ट्रेड को. तो now if you look at this one belt one road, the belt that runs across Eurasia, it is bypassing the Straits of Malacca, it bypasses the Bab el-Mandab, the entrance to the Red Sea, it bypasses Suez Canal and also Gibraltar. वो सारे जो ट्रेन रूट्स हैं वो सीधा ही पहुंच जाते हैं, ट्रैवलिंग थ्रू रशिया एंड पोलैंड एंड सो ऑन, वो यूरोप पहुंच जाते हैं. सो it took care of that problem, not so much as the goods, but energy flows have been affected positively for China. Because तुर्कमेनिस्तान से भी अब गैस आ रही है, रशिया से आ रही है, उज़्बेकिस्तान से आ रही है. So ये मैंने कहा कि ये भी इसको ज़रा one belt one road को हम देखें. This is rather the geopolitical dimension. Geopolitical dimension, I think, which we missed last time. So ये जो BRI है, Belt and Road Initiative, it's an investment in infrastructure, in highways, in railways, fiber optic cables, satellite links. So ये जब अनाउंस हुआ था तो $1 trillion का था ये. I think we missed, announced then in 2013. So just to put things in their proper perspective, ये जो यूरोप का, जो अमेरिका का मार्शल प्लान था, टू रिकंस्ट्रक्ट यूरोप, वो था 130 बिलियन इन टुडेज डॉलर्स. वो 130 बिलियन का था. सो दिस इज 1 ट्रिलियन. एंड नाउ लेटर ऑन, इनिशियली इट वाज जस्ट लाइक आई सेड अर्लियर टू लिंक ईस्ट चाइना विद यूरोप. नाउ इट इज एक्सपेंडेड टू $8 trillion, and it is supposed to culminate in 2049 to coincide with the 100th anniversary of
the founding of the People's Republic. और अब एज यू नो लैटिन अमेरिका, अफ्रीका, जो पैसिफिक नेशंस हैं वो भी देर ऑल पार्ट ऑफ BRI. नाउ इट हैज़ बिकम हाँ 2/3 ऑफ EU countries are also part of BRI. Major shift in the global rule-based international order. अच्छा, अब इसमें हुआ ये है कि how this is different from 2001. 2001, the West went to, or the America went to China. They made them part of the WTO. और था कि जी, we will tell you how to do trade, how to follow our rules, how to follow our best practices, businesses किस तरह चलते हैं. And Chinese were quick to learn. 12 years later, in 2013, they come up with BRI, and so much has changed. Now, China is coming to the West. ये फर्क हम है आपको ना बताएं कि हम आपको बताते हैं कि ये what our vision is, what our plans are, what our business models are. For instance, मैंने business model का शायद जिक्र किया था कि वो उन्होंने इसे HP, which is an American computer manufacturing company, उनसे उन्होंने बात करके they had their production facility moved to Chongqing in China. Why? Because Chongqing से ट्रेन चलेगी ये across Eurasia, and instead of computers getting to their customers in 2 or 3 months, whatever it is, it will be there in a week. It will be on the shelves in Europe. So business models भी change कर दी है. So now China has come to the West. अच्छा, अब आप अभी पहले बात कर रहे थे. इसी से सेगवे अच्छा होता है कि सर ये जो बिजनेस मॉडल चेंज किए हैं इसके अंदर अब इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर क्या परफॉर्मेंस आई है. दिस इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग चार्ट दैट आई कैन सी राइट नाउ कि 2003 से शुरू होता है ये और 5 इयर्स के इंटरवल है सर और 2023 तक आ रहा है. बट व्हाट डज दिस चार्ट एक्चुअली शो, मतलब ये बता क्या रहा है? मैंने किया ये है इसमें कि द फर्स्ट कॉलम is the year, and the years are given in 5-year intervals. अच्छा, exports are in trillions of dollars. So the first column coming down, there are 5 figures. And then imports are the third column, or the fourth column is second and third added. So that is international trade. Okay. तो आप ये देखेंगे 2003 से 2008, 2001 में आता है World Trade WTO का, and America goes out of its way to make China a member of WTO. Why? Because they wanted low wages. They wanted to bring down the price of goods for the American consumer. So ये 300% increase है in international trade from 2003 to 2008. Because it became part of WTO. WTO. Now China is access to international markets. Yeah. And American and Western capital. Yes. अच्छा, 2008 से 2013 तक जो है 61%. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइसोलेट कि जी BRI का कितनी इसमें कंट्रीब्यूशन है और नेगेटिव कंट्रीब्यूशन ऑफ ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस क्या है इसमें. बिकॉज कीप इन माइंड द 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस बिल्कुल ऐसा ही है और स्लो डाउन हुआ. सो उसका भी इफेक्ट होगा, BRI का पॉजिटिव इफेक्ट होगा. सो 61% इफेक्ट इसमें शो हो रहा है. 2018 तक ये 11% पे आ जाता है. But if you look at it from 2013 to 2023, so you add 11 and 29%, so you're talking 40% increase. This is despite COVID. And also sir, despite ये जो the trade war, इसके दरमियान trade war भी exactly. और COVID-19 भी था. COVID-19 भी आया, trade war भी आई. So ये चीज़ें, ये एक और इंटरेस्टिंग फिगर ये है जो आप देख रहे हैं ना 2023 का $3.38 billion एक्सपोर्ट्स टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. इसमें अमेरिका का कंपोनेंट है $501 billion. Okay. So it adds up to about 15% of China's total exports. So I'm not sure to what extent ये trade wars will be beneficial for America and harmful to China when only 15% of Chinese trade is. वॉल्यूम उतना नहीं है. वॉल्यूम जो पहले था ट्रेड वॉर के शुरू में, जो ट्रम्प ने जब शुरू किया था ये सारा मामला. सर इस ट्रेड में नेचुरली द रोल ऑफ पोर्ट्स इज द होल्ड्स द क्रूशियल मोस्ट क्रिटिकल इम्पोर्टेंस. एंड हम पहले भी इस चीज़ पे बात कर चुके हैं कि
when we talk about a port, we talk about the whole infrastructure. अब railways, gantry और सारा containers, handling capacity. And the next chart actually talks about that. जी हाँ, देखिए 80% of the world's merchandise trade is shipped. So you are looking at the ports for that reason. So वो कहते हैं कोई भी आप ऑब्जेक्ट देखें at one point in its lifetime it has traveled through sea, ऐसा ही है. अच्छा, but in the case of China, 90% of Chinese trade is conducted through ports. तो अब जो अगला चार्ट देख रहे हैं वो ये मैंने जो इसको बनाया, this is only Chinese ports. You have to keep in mind that out of the 10 largest ports in the world, 7 are Chinese. 7 are Chinese. Out of the 10 largest. 10 largest. अच्छा, ये जो मैंने चार्ट बनाया है, इसमें we are only looking at the Chinese ports. So the largest port in the world, and we are only looking at TEU capacity. TEU is containers basically. 20-foot equivalent units. So अगर containers come in two sizes, 20 feet by 8 feet by 8.5 feet, or 40 feet by 8 or 8.5 feet. So जो बड़ा container है 40 foot का, वो it is counted as 2 TEUs. 2 TEUs, ठीक है. So ये जो आप देख रहे हैं शंघाई का 50 million containers, TEUs are processed through Shanghai port every year. अच्छा, you know it's quite an undigestible figure. So to make it more digestible, मैंने इसको per day पे देखा. So I think we can easily imagine, or more easily imagine, 136,000 containers in 24 hours. 1,36,000 containers एक पोर्ट से. Shanghai port, that is what it is. Largest port in the world. अच्छा, ये डेटा जो है ना, ये कुछ 2024 का है, 2020 का है, but you know it gives you a rough idea. It fluctuates as well, but ballpark आपको पता. So Shanghai, East China Sea, then you have Hong Kong, which is on South China Sea. That is उसकी रैंकिंग नंबर 5 है. वो डेली 43,000 प्रोसेस कर रहा है. Xiamen, इसको चाइनीज they are constantly upgrading this. Or Xiamen is right across. It's on the Taiwanese Straits, across from Taiwan. So they are not concerned about any war taking place in this. वो अपना investment करते जा रहे हैं. 8th largest port is Xiamen. Dalian, which is northeast China, is number 9. And then Horgo's dry port. And this was inaugurated in 2015. Okay. ठीक है. So अच्छा, इसमें हमने ड्राई बल्क की जो कैपेसिटी है पोर्ट्स की वो नहीं देखी, और लिक्विड बल्क की नहीं देखी. लिक्विड बल्क वुड बी क्रूड ऑयल, डर्टी ऑयल की भी कैपेसिटी होती है. सो आई मीन दैट एनालिसिस वुड बिकम फार टू कॉम्प्लिकेटेड एंड मे बी beyond our reach to analyze. And in any case, whenever you see an analysis, everybody will be coming, every specialist will be coming with different analysis. So we are confining our analysis to containers. अच्छा, अब जो अगली स्लाइड देख रहे हैं, Ports of Pakistan. वो ports of Pakistan in comparison with the Chinese. So कराची का जो नंबर 1 हमारा पोर्ट है, 4.25 million TEUs per year capacity. Per year. So वो 11,000 per day process करता है, which is quite impressive. The real problem is with Gwadar. Gwadar का 50-year master plan जो है वो develop हुआ 2006 में. Okay. उसकी design capacity is कराची की 11,000 है, इसकी 375 है. और अभी भी आप देखें, they are talking of what will happen in 2046 and 2047. The rest of the world is not going to be waiting. ये जो पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स बातें करते हैं ना कि जी 10 साल में ये हो जाएगा, 15 साल में ये हो जाएगा. The world is moving at breakneck speed. They are not going to wait for. गवादर का मतलब कराची अभी जो एग्जिस्टिंग पोर्ट है वो 11,000 कंटेनर्स पर डे है. तो गवादर द फ्लैगशिप प्रोजेक्ट एंड द होप्स है ये उसकी डिज़ाइन कैपेसिटी मीन्स कितना होगा अभी असल तो नहीं पता कितना होगा. But this is like the maximum number it can achieve. So why is it so less? जो डिज़ाइन कैपेसिटी. अच्छा, अब we were told कि ये इसको यूज़ किया जाएगा for trade. This will be an intermodal port and trade will be going to China. China से इधर कंटेनर नीचे आ रहे होंगे. तो ये तो चाइना को नहीं हेल्प करता कोई 375. I mean, look at the kind of capacity their ports have. अच्छा, अब अगला सवाल है कि अगर ये इसमें कोई बल्क ड्राई बल्क की भी कैपेसिटी होगी, लिक्विड बल्क की कैपेसिटी होगी, तो ड्राई बल्क वी कांट इंपोर्ट एंथ्रासाइट कोल एंड एक्सपोर्ट इट टू चाइना. वी कांट डू इट. तो इसका मतलब तो हमारी अपनी यूज़ के लिए हुआ ना. फिर हाउ इज दिस पोर्ट गोइंग टू बी एडिंग वैल्यू टू
Chinese trade. They want us to facilitate their trade. Yeah. जी, तो facilitation में तो even the sheer number of amount of containers handling वही बहुत सर कम है. So वो at best I think we can, but we can discuss it later. But जो अभी समझ आ रही है कि at best it can only supplement Pakistan's trade infrastructure. Yeah. Right sir. और ये जो last slide है इसमें there are World Bank rankings of the ports. अच्छा, इसमें ये है कि ये जो है ना, ये capacity is one way of looking at a port. ठीक है. The other way, another way of looking at a port is their efficiency. For instance, America, जो American ports हैं, they take on the average twice as much time to handle or to process a container as a Chinese port. ठीक है. जो मैंने पहले बात की थी ना benchmarks की, तो a couple of managers of American ports are looking at the Chinese model कि तुम्हारे benchmark क्या है. 2001 में ये Americans were going to China. Now the Chinese are coming to now the Americans are going to the Chinese कि हमें बताओ कि भी ये benchmarking कैसे करें, best practice क्या है, best practice क्या है. So we have to look at the efficiency. So the World Bank की rankings are according to efficiency. Yeah. So this is a container port performance index developed by the World Bank. Okay. And they look at many things. They look at the waiting time at the outer harbor, कि जो ship आए, container ship आए. These large container ships can be as big as 18,000 containers. In fact, I think the largest is 24,000 containers. At one time. So उसका जो waiting time in outer harbor वो क्या है? To come to the berth, वो कितना टाइम लगा, और फिर कितनी जल्दी आपने उनको ऑफलोड किया, और टर्न अराउंड टाइम क्या है शिप का. So they look at all these things. So the most efficient port in the world is Yangshan port. Now I must point out कि Yangshan port, ये जो लिखा है ना 2 million TEUs, ये TEUs भी अपने जेहन में रखें ना, यही प्रोसेस कर रहे हैं, नंबर 1. पर Yangshan port is part of Shanghai. Okay. The larger Shanghai port complex. So anyway, so this is number 1, and number 2 is number 8 is Guangzhou. मैंने at random उठाए China. Number 15 is Hong Kong. Number 19 is Visakhapatnam in India. But उसकी आप देखें ना, उसकी जो साथ ही ड्रॉप डाउन कर जाती है TEU वैल्यू. TEU उसकी कम है, तो इसलिए number 19 is easier to achieve. Number 40 is Sri Lanka. अमेरिका का जो सबसे हाईएस्ट है वो चार्ल्सटन साउथ कैरोलिना है, which is number 53. अमेरिका के ना बहुत प्रॉब्लम्स हैं इनके ऑफ एंड ऑन. अभी पिछले साल में अगर आप देखें तो लॉन्ग शोरमैन, पीपल हु वर्क ऑन द डॉक्स, दे वेंट ऑन स्ट्राइक्स. सो उनकी जो एफिशिएंसी है वो फॉर मेनी रीजंस इट गेट्स अफेक्टेड. सो टोक्यो है, फिर कराची पाकिस्तान 61 है, and it's ranked higher than London and Los Angeles. Which is impressive. तो अभी इन पैरामीटर्स के ऊपर भी there needs to be a study or something sort of thing done कि what will Gwadar will look like after it is complete. बिल्कुल. ये देखें ना आप, the world looks at capacity, the world looks at the efficiency. तो ये ग्वादर का फ्यूचर, ग्वादर की कैपेसिटी क्या होगी, ग्वादर की एफिशिएंसी क्या होगी, और ग्वादर का फ्यूचर क्या है, ये सब चीज़ें नीड टू बी स्टडीड. और ये मैं ख्याल अगले एपिसोड में हम ये डिस्कस करेंगे कि इज़ BRI in any way dependent on CPEC and Gwadar as we would like to believe here in Pakistan. As there is like a lot of news channels और इस तरह से कहते रहते हैं कि चाइना भी क्यों मजबूर, but it turns out it is not the case. So we'll be looking at that. अच्छा, अब इसमें जो एक मैं पॉइंट कहना चाह रहा था which I missed, कि जो है ना कि China has come to the world. China has come to the world with its all-encompassing foreign policy. Whichever country it is dealing with, it is looking at its relationship with that country through its lens of business of BRI. Okay. So next time we discuss. Definitely, sir. Definitely, sir. Thank you so much for the time. And इसको सर हम complete करने के बाद दूसरे टॉपिक्स के ऊपर भी जरूर आएंगे इंशाल्लाह.